So today we will do the next dual space, and it is an infinite dimensional space, and now we will find the dual space of infinite dimensional spaces. So आप heading देंगे dual spaces of infinite dimensional spaces. Number one, prove that the dual space of dual space of C naught under the norm infinity and is L1 under the norm 1. That is C naught norm infinity, its star is equal to L1 norm 1. This you want to prove, right? So C naught is the space of all convergent sequences. And if I will take X here and X is the sequence Xn, and then how the norm infinity is defined, this is supremum of Xn its mod, right? And if I will take a vector X belongs to L1 infinity, right? And then what condition it will satisfy? X is equal to Xi with respect to the condition summation I running from 1 to infinity, mod of Xi is less than infinity. And if I will take the norm, and the norm is defined as summation I running from 1 to infinity, mod of Xi, right? So अब यहाँ पे स्टार है मतलब यहाँ से फंक्शनल लेंगे. तो सबसे पहले हम बेसिस की बात करेंगे, नेचुरल बेसिस की. So since the sequence EI, अब हम एक सीक्वेंस ले लेंगे EI, ठीक है? EI कॉन्स्टिट्यूट्स, इसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूट्स शॉर्टर बेसिस बोलते हैं बेटा इसको, SCHAUDER, शॉर्टर बेसिस. Consider the sequences which constitutes a shorter basis for the space C naught, but C is small, C capital नहीं है, ठीक है? Infinity. Therefore, every X is equal to lambda I belongs to C naught, can be uniquely expressed in the form X is equal to, क्योंकि बेटा vector space है. This is summation I running from 1 to infinity, lambda I EI. So EI is the basis, lambda I is the elements of the vector X, ठीक है? क्योंकि एक सीक्वेंस है, इसका मतलब ये हुआ कि जो लैम्डा ई सीक्वेंस है वो कन्वर्जिंग टू जीरो जा रही है, ठीक है? लैम्डा ई सीक्वेंस इज कन्वर्जिंग टू जीरो एज आई टेंड्स टू इंफिनिटी, और इस सीक्वेंस का नाम हमने क्या रखा है? एक्स रखा है, right? And this is a linear space, so every vector can be uniquely expressible in the form summation I running from 1 to infinity, lambda I EI. So now a function लेंगे, let f belongs to C naught star, be arbitrary, right? Now अब क्वेश्चन देखो क्या है, आपने एक मैपिंग जब डिफाइन करनी है दोनों सेट्स के बीच में, when you will define the mapping, आपने एक मैपिंग बेटा T बनाएंगे आप, right? तो वो जो T मैपिंग है, it will start from C naught star और जाएगी कहाँ पे? ये L1 पे, L1 infinity पे. So जब आप एक यहाँ पे फंक्शनल लेंगे यार, तो इसकी इमेज यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट होगी T of F, ठीक है? और T of F जब कॉन्स्टिट्यूट होगी तो इट इम्प्लाइज कि जो यहाँ पे एलिमेंट्स आने चाहिए आपके इसमें, वो कुछ F of EI टाइप के आने चाहिए, राइट? F of EI. So first of all, let F belongs to C naught star be arbitrary, right? Now write Sn.
Sn is the sum of first n events. जितना भी हमारे पास x तो एक अपने आप में बेटा देखो x के साथ समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी लैम्डा ई आई किया, मतलब x जो है वो एक सीरीज का सम है, ठीक है। हमने क्या किया, Sn फर्स्ट n टर्म्स ले ली सीरीज की, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n लैम्डा आई ई आई, ठीक है। So when you will take its image with respect to f of Sn, then this becomes summation I running from 1 to n lambda I f of ei, right? And now the next is x minus Sn, its norm is tending to 0 as n tends to infinity. क्यों बेटा, सीरीज का सम क्या है, x है, right? तो अगर सीरीज का सम x का, इसका मतलब जो Sn एक सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, वो सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रही है, x को कन्वर्ज कर रही है, बिकॉज द सम ऑफ द सीरीज इज x, and if you will take the sequence of partial sum of the series, that will also converging to x. So therefore, as Sn will converging to x as n tends to infinity, therefore the norm of x minus Sn is tending to 0 as n tends to infinity. ठीक है जी। सो सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस, बेटा f किस में है, f है c नॉट स्टार में, इसका मतलब f एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, राइट। f कॉन्टिन्यूअस है, सो यहां से आप लिखेंगे, यहां से एक स्टेप लिखेंगे, इट इम्प्लाइज Sn is tending to x. Now f is continuous, it implies f of Sn is also tending to f of x, right? So therefore how f of x is expressed, therefore f of x, क्योंकि f of x आपका क्या आ गया, f of Sn आ गया, right? As n tends to infinity. So beta f of x is tending to what is Sn? This is summation I running from 1 to n lambda I ei, ठीक है जी, यही है आपका Sn as n tends to infinity. It implies f of x is equal to, है ना, when you will put here limit n tends to infinity, ये आप अंतर चला जाएगा, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n लैम्डा आई f of ei. अब आपने जब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा दी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सो f of x इज इक्वल टू समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी लैम्डा आई f of ei। मतलब f of x बनाने के लिए ये सारा का सारा जो था प्रोसीजर हमें करना पड़ा, राइट। फॉर ऑल x, x कहां से आ रहा है बेटा, फॉर ऑल x इज इक्वल टू lambda I and this belongs to C naught. X एक सीक्वेंस है आपका जो किसमें है, C naught में। Now what to do, now we will define a map, define a map. Which map you have defined, अब देखो जो मैप आपने डिफाइन करना है ना, मैप आपने टी लिया, टी कहां से कहां आएगा बेटा, सी नॉट स्टार्ट से L1 में आएगा, राइट। सो व्हेन यू विल डिफाइन द मैप, f यहां से आएगा, इफ आई एम टेकिंग द वेक्टर्स एज f of e1 f of e2 सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ठीक है। तो देखो ये सीधा वेक्टर्स इसमें नहीं लिखेंगे, ये वेक्टर्स L1 को बिलोंग करने चाहिए। तो मैप को डिफाइन करने से पहले हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो fi सीक्वेंस है वो L1 में आ रहा है, ठीक है। सो वी विल नॉट डिफाइन अ मैप हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्टली we shall prove that the sequence f of ei belongs to L1. So L1 और L1 इंफिनिटी, ये तभी आएगा बेटा सीक्वेंस जब बेटा समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी f ऑफ ei मॉड जो है वो लेस देन इंफिनिटी बनेगा, ठीक है। दैट इज व्हेन समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी मॉड ऑफ fi विल बी लेस देन इंफिनिटी। सो लेट्स डू, कैसे होगा ये, सो फॉर एनी n बिलोंग्स टू n, फॉर एनी n belongs to capital N, एक एलिमेंट लिया x is equal to x naught which is xi, बिल्कुल वैसे जैसे हम पीछे लेते थे, belongs to c naught. How the xi is defined, this is f of ei its conjugate upon f of ei its mod when f of ei is not equal to 0 and 1 less than or equal to I less than or equal to n, and here f of ei, the answer will be 0 other is equal to 0 when I is greater than or equal to n plus 1. So xi is defined. So first of all we will find the norm of x naught. What is x? X क्या था? What is x naught? X naught आपके पास
exii. You have x is exii. तो exii किस में है? ये C naught को belong कर रहा है. Then how the norm is defined? This is supremum of exii mod 1 less than or equal to I less than infinity. So you will substitute the value here. What is exii? Exii is f of ei conjugate its mod divided by f of ei. ठीक है, mod भी एडजस्ट कर दिया हमने इस तरह से. तो दिस इज, कल भी बेटा बात हुई थी, z कॉन्जुगेट ऊपर है, मॉड ऑफ z नीचे है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल. सो यू विल गेट वैल्यू, maximum value what you will get, that is less than. So supremum, the norm will be either equal to 1 or it is less than or equal to 1. So therefore norm of x infinity is less than or equal to 1. Next, now अब f of x नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. इनको बेटा नंबर देते जाइए, आगे जाके हम इसको यूज करेंगे. जब हम मैपिंग बना लेंगे ना, उसमें ये सारे पॉइंट्स यूज होने हैं. So now t of, now f of x naught. Same exactly, f of x naught is equal to summation I running from 1 to infinity xi f of ei. So this is summation I running from 1 to infinity xi की value. This is f of ei conjugate upon f of ei mod, right? And here is f of ei. So this is summation I running from 1 to infinity. हाँ जी, ये क्या बनेगा? z इंटू जेड कॉन्जुगेट मतलब मॉड ऑफ f ऑफ आई स्क्वायर अपॉन f ऑफ ei. ठीक है, दिस गेट्स कैंसल. सो यू आर ओनली लेफ्ट विद summation I running from 1 to infinity f of ei its mod. So therefore बेटा x naught infinity था less than or equal to 1. f of x naught जो है आपका वो आ गया summation I running from 1 to infinity f of ei its mod, right? Right? And what is the relation between mod of f and this? Beta, what is mod of f? Mod of f is equal to, how it is defined? This is supremum of f of whatever you are taking here, f of x, यहाँ जो भी आप यहाँ पे ले रहे हैं, f of x नॉट ले रहे हैं यहाँ पे, सपोज कीजिए. ठीक है, f of x नॉट इट्स मॉड विद डिवाइडेड बाय नॉर्म इन्फिनिटी. ठीक है जी, ये आपने डिफाइन कर दिया यहाँ पे. और आपको पता है नॉर्म ऑफ f इज एज, norm of f is greater than or equal to, इसको नंबर 2 दीजिए. It is greater than or equal to f of x naught its mod divided by norm of x infinity, right? So this is equal to, what is f of x naught mod? ये देखो ऊपर से आएगा. This is summation I running from 1 to infinity f of ei, right? और ये as it is. और आपको पता है ये अगर less than or equal to 1 है, एंड अगर आप बेटा देखो, अगर सुप्रीमम डिफाइन किया है दोनों तरफ से आ जाएगा, और यहां से आ जाएगा 1 ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स इन्फिनिटी, जैसा कल किया था. दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. सो यहाँ पे आप जब 1 लगाएंगे तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा. ठीक है, सो देयरफॉर व्हाट यू हैव गेन्ड हियर, therefore norm of f is greater than or equal to summation I running from 1 to infinity f of ei its mod. It implies summation I running from 1 to infinity f of ei mod is less than or equal to norm of f. तो इसका मतलब आपने इस नंबर को किसी क्वांटिटी से लेस देन प्रूव कर दिया. आप क्या चाहते थे? एंड दिस इज लेस देन इंफिनिटी. Therefore the sequence f of ei belongs to L1 infinity, और जैसे भी नोटेशन लिखी है L1. Now you will define the map, right? Now define the map. अब हम मैप डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो एलिमेंट आपने L1 में लेना है पहले उसने कंडीशन सेटिस्फाई करनी है. बेटा ये क्वेश्चन अलग क्यों है? क्योंकि r रेज टू पावर n में जब आपने बनाना था r रेज टू पावर n का जो मैपिंग थी वो r रेज टू पावर n ही थी उसकी ड्यूल स्पेस. इसका मतलब जब आपने यहाँ पे एलिमेंट्स लिए x1 x2 सोन अप टू xn, तो उसकी इमेज के एलिमेंट्स अगर आते हैं f of x1 f of x2 सोन अप टू f of xn, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ वो n टुपल्स होने चाहिए और उसके एलिमेंट्स r में से आने चाहिए. लेकिन अगर किसी एलिमेंट ने L1 में आना है तो उसने सबसे पहले एब्सोल्युटली सम ऑफ सीरीज जो है उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करना है. सो दैट्स व्हाई ये सारा प्रोसीजर हमने किया. अब हम मैपिंग डिफाइन करेंगे. नाउ डिफाइन अ मैपिंग. डिफाइन अ मैपिंग.
टी कहाँ से कहाँ, सी नॉट स्टार टू L1 इंफिनिटी, यहाँ जैसे भी लिखा है एज L1 एज टी ऑफ एफ। अब आप बड़े शान से लिख सकते हैं एफ ऑफ E1, एफ ऑफ E2 सोन अप टू इंफिनिटी फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू C नॉट स्टार एंड एफ ऑफ EI belongs to L1 in. Now, number 1, it is linear. Number 2, it is 1, 1. It is on 2, and it is isometry. So all are very easy to do, but isometry same, norm of TF is equal to norm of F. Is it clear? So you can easily prove the theorem beta ji by this. We have already done, सब कुछ बिल्कुल वैसे प्रोसीजर है. आप कहाँ से शुरू करेंगे, आइसोमेट्री कहाँ से शुरू करेंगे, आइसोमेट्री आपकी शुरू होगी एफ ऑफ एक्स से, राइट. एफ ऑफ एक्स का मॉड लेंगे, फिर आप उसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, वो लेस देन और इक्वल टू में, यहाँ से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू. और जो अभी हमने एफ ऑफ ई आई का समेशन लेस देन नॉर्म ऑफ एफ प्रूव किया, वहां से आपका आ जाएगा. सो हियर, और जब आप इसका फिर सुप्रीमम, यू विल गेट द सुप्रीमम. जब आप सुप्रीमम लेंगे तो नॉर्म ऑफ एफ लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एफ आ जाएगा. ठीक है, एक रिजल्ट यहाँ से आ गया. जो पिछला प्रूव किया आपने, पिछला आपके पास था summation I running from 1 to infinity f of ei mod, ठीक है जी, is less than or equal to norm of f. ये हमने उठाया नंबर 2 से, और ये किसकी वैल्यू है, ये norm of tf की वैल्यू है. दिस इज less than or equal to norm of. वो सारा प्रोसीजर आप दोबारा करेंगे. So on combining 1 and 2, what you will get, norm of tf is equal to norm of f. Therefore t is an isometry. Therefore the dual space of C naught is L1 infinity. That's. Anji, I hope the point is clear to all of you. हाँ जी, क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी हाँ. Yes, ma'am.